Good morning, students. How are you all? I welcome you in EVS online class. So, we were doing lesson number 14 from eating to digestion. Yes, we were reading this lesson. On page number 108, we have read that we should chew the food properly. We should take the small bites and then we should eat our food. Then food is chewed by our teeth. Then through the food pipe, it goes into the stomach. From there, it goes into the small intestine and then to the large intestine. And in stomach and intestine, food is digested by digestive fluids, and undigested food get collected in rectum and is then extracted later on. Then we have read about the human digestive system, and last वीडियो वी हैव रेड अबाउट द इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. इंस्टेंट मीन जो हमें एकदम से मिल जाती है. Then we have read presence of iron in the food. Here it has given the example of one girl whose name is Sonia, and she is not feeling well. She is suffering from the deficiency of shortage of blood, and it is known as anemia. And today we will start page number 112, food groups. Food groups and food pyramid. Okay, so today we are going to read about the food groups and the food pyramid. So, we include many things in our meal. हम अपने खाने में बहुत सारी चीज़ें खाने की इंक्लूड करते हैं मील्स में, अपने खाने में. सम ऑफ देम इंक्लूड, उसमें से कुछ है कॉर्न. कॉर्न मीन्स मकई. स्प्लिट ग्राम मीन्स चना दाल. पल्स मंग राइस मतलब चावल. वीट आटा. ब्रिंजल बैंगन. मिल्क दूध. कर्ड दही. पी मटर. कैरेट गाजर. मैंगो आम. पपाया एप्पल. सेब. स्पेनेच पालक. लेडी फिंगर भिंडी. पोहा. बीटन राइस. बिटर गॉड लौकी. बॉटल गॉड bitter gourd is your karela and bottle gourd is your lauki. Cheese paneer. Buttermilk छाछ. मावा खोया. egg अंडा. meat मांस. fish मच्छी. चपाती roti. bread etc. If you want you can add more things. You can add more things also. Those who are non-vegetarian they can add more things. Okay, write these things in appropriate category. Now in this they have given you one table that I am drawing here. First one is your green vegetables. Second is your milk and milk product. Third one is your fruits. Fourth one is your grains and pulses. Fifth one is your meat, eggs, etc. Okay, in this the list they have given above you have to write in the different category. So first one is your corn. So corn will
First, there is a green vegetable. So in green vegetables, you will write spinach, palak. Okay. Second is your bottle gourd. Third is your bitter gourd. These are all the vegetables. That's why we are writing under the green vegetable heading. Okay, these are the headings they have given you in the book. Next is your ladyfinger. Next is your carrot. Next is your pea. And next is your brinjal. Okay. Now your milk and milk products are मावा और खोया. Second is your buttermilk. Third is your cheese. Fourth is your curd. Last one is your milk. Okay. In fruits, first one is your apple. Second is your mango. Third is your papaya. 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 Papita. Okay. Grains and pulses. First one is your bread. Second is your chapati. Third is your poha. Next is your wheat. Next is your rice. Next is your corn, pulse, that is pulse mung, pulse mung. Next is your split mean tuti hui, split dal, split gram chana dal. Okay. And last is your meat and eggs. It will come first fish, then meat, fish, meat and egg. So this table you have to write down in your book as well as in your notebook. Okay. Now next, if we include right amount of these things in our diet, then certainly we will get necessary nutrients such as carbohydrates, proteins, starch, vitamins and minerals etc. for our body. अगर हम इन्हें सही तरीके से सही अमाउंट में लेंगे तो जो हमारा डाइट है उसे हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, starch, vitamins and minerals of our body. So we should take a balanced diet in which we will get carbohydrates, proteins, starch, vitamin and minerals for our body. So next, what to eat and how much to eat. We should, now this is your pyramid. Okay, in a pyramid you can see in the book, I will draw here also on the blackboard so that you can easily understand. So for pyramid you have to draw one big triangle. Okay, so this is your pyramid. Now pyramid goes like this.
from down to up. Okay, so this is your one, this is your second pyramid. It is divided into two parts. Then third one, it is also divided into two parts. Okay, then first, so you have to consume in decreasing order. कंज्यूम मीन्स ये पहले ज़्यादा लेना है, फिर उससे थोड़ा सा कम लेना है, फिर कम लेना है, फिर बहुत ही कम लेना है. ओके, कंज्यूम इन डिक्रीजिंग अमाउंट. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द डाउन. हमें क्या चीज़ ज़्यादा मात्रा में लेनी है. ओके, हमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या क्या लेना है. फर्स्ट वी विल फिल दैट इन पिरामिड. तो सबसे पहले हमें लेनी है चपाती, खानी चाहिए ज़्यादा. ओके, चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीच, पोहा, सूजी, etc. So in a down pyramid we should consume this in a eat in largest amount. मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ये खाना चाहिए. ओके, देन इससे कम क्या खाना चाहिए. स्पैनिश, पालक, देन कैरेट, then cauliflower, फूल गोभी. ओके, cauliflower, then tomato, then potato, etc. मीन्स इस साइड आ गया वेजिटेबल्स. दिस साइड योर फ्रूट विल कम. ओके, एप्पल, banana, grape, papaya, orange, etc. So vegetables and fruits you should eat in large amount. Eat in large amount. Okay, then come milk, curd, milk products. Okay, buttermilk, then cheese, then butter, etc. So you should eat मॉडरेशन में, नॉर्मल में खाना चाहिए. और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो फिश, मीट और नट्स, इनको हमें मॉडरेशन में खाना चाहिए. मीन्स नॉर्मल खाना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा. ठीक है, ना कम खाना चाहिए ना ही ज़्यादा खाना चाहिए. सो वी शुड ईट दिस इन मॉडरेशन. ओके, and next one is ghee, oil and sweets, मिठाई. ये सब हमें लेस मात्रा में लेनी चाहिए. eat less. So we should follow this pyramid for eating our food. तो pyramid will go from down to up. हमें ज़्यादा खाना चाहिए. चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीर, पोहा, सूजी, एक्सेट्रा. ठीक है, फिर हमें उससे ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब सबसे कम खाना चाहिए घी, ऑयल और स्वीट. फिर उससे थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए मिल्क की, और नॉन वेजिटेरियन वाले फ़िश, मीट और नट्स खा सकते हैं. तो मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, बटर एक्सेट्रा खा सकते हैं. नेक्स्ट आपकी
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाएंगे, स्पेनिश, कैरेट, कॉलीफ्लावर, टमाटो, पोटैटो, अनियन, बीन्स और लार्ज अमाउंट में हमें खाना चाहिए एप्पल, बनाना, ग्रेप, पपाया, ऑरेंज। और लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या खाना चाहिए? चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीर, पोहा, सूजी एक्सेट्रा। ओके, सो this one in your book 113 you write down the name of a thing according to their quantity you take. okay, so you try to do this कि सबसे कम आप क्या खाते हो, फिर नॉर्मल आप क्या खाते हो, फिर लार्ज अमाउंट में क्या खाते हो, और सबसे ज़्यादा मात्रा में आप क्या खाते हो. दिस वन इज योर वन टाइप ऑफ होमवर्क, यू डू इट इन द बुक. So that's all for the day. Thank you. Take care.